नमस्कार बच्चों, myself Anil Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Botany, CPN PG College कानपुर। Dear students, आज हम लोग First Aid and Health, that is the course which is the co-curricular course of semester 2 under the NEP 2020। आज हम जो है इस पे जो टॉपिक है फर्स्ट एड रिलेटेड विद द सेंस ऑर्गन, दैट इज माय टॉपिक, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the sense organs? Sense organs are the organs that respond to external stimuli by conveying impulse to the sensory nervous system. We define sense organs in another definition. Sense organs are specialized organs that help to perceive the world around us. They are an integral part of our life, and it is the only way that enable us to perceive the environment. These sense organs govern our association and our interaction with the environment. In human body, there are 5 sense organs. Okay? These are sight, the eyes; hearing, the ears; smelling through nose; tasting through the tongue and nose; and touching with the skin. The first sense organ, that is eye, sight, or they are also known as ophthalmoception. These are the visual sensory organ in our body. These are sensitive to light images. The eyes vary in color depending upon the amount of melanin present in our body. Okay. It helps in the sense of sight by detecting and focusing on the light images. As figure, you saw that the parts of human eye. First, the upper diagram, they're showing the external structure of eye, and below there the internal structure of eye. External structure of eye, in the top they have eyelids, eyelashes, pupils, iris, button lid, cornea, tear duct, जहाँ से आंसू निकलते हैं आपके, and sclera. The internal structure of eye, the white black part is known as cornea. Inside the cornea, the iris है. Iris जो पार्ट है वो आपके लेंस के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसे नजदीक देखना या दूर का देखना दोनों आई की आइरिस जो होती है वो कंट्रोल करता है. रेटिना, that is the part of very important where the images are formed, and a retina is converted to optic nerve, and optic nerve receive the information या stimuli from the retina, and these information reach to the brain, and brain convert these messages in meaningful way. Here the hearing या audioception, this is the second sense organ. Here are the auditory sense organ of our body.
They help us to perceive sound. Our auditory system detects vibration in the air, and this is how we hear sound. This is known as hearing or audio system. The ear are divided into three sections, namely outer ear, inner ear, and middle ear. All sounds are basically in the form of vibration. So the outer ear transfers these vibrations into the ear canal, where these vibrations are transformed by the brain into meaningful sound. A part of hearing, this sense is also important for balancing in our body. You look the structure of ear, the outer side, the ear pinnas are present. Ear pinnas that connect the ear canal, and ear canal is in the form of tympanic membrane. This tympanic membrane receive the stimulus or vibration from outside. There are the different kinds of bones are present. That is malleus, incus, and then these uh, eardrums are connected with nerves. These nerves receive the information, and this information reach to the brain, and brain converts these information in meaningful way. Tongue, the taste or Gustavshefsen, the tongue helps in perceiving various tastes and flavors. The taste buds are present between papillae on the tongue. These help in sensing different tastes. They are the different region of tongues which receive different types of the taste. The senses of smell and taste tend to work together. If one could not smelling something, they could not taste it either. The sense of taste is also known as Gustavus. We look the figure of tongue. Nose, this is sense organ for the smell. Nose is an olfactory organ. Our olfactory system helps us to perceive different smells. This sense organ also adds our sense of taste. The sense of smell is also known as olfaction. During a cold, जब हमें जुकाम होती है, the body produces mucus which blocks the sense of smell. This is the reason why the food which we eat tastes bland. तो कोई स्मेल नहीं आती, टेस्ट नहीं पता चलता है, ठीक है. You look the structure of nose. There the external structure. Here the external structure. ठीक है. Their part is called columella. This is the tip of nose. ठीक है. This is known as Elanacea. This is the bridge. ठीक है. There is anterior nares. This is the interior view of nose. That is Elanacea, vestibule, tips. This is the sectional view of nasal septum. ठीक है. These are septal cartilage bones होती हैं. ये bony portions होते हैं. ठीक है. ये frontal sinus part है. ठीक है. cranial cavity है. ठीक है. हाँ, ये nasopharynx है जहाँ से ये esophagus वगैरह लास्ट में स्टार्ट होता है. ठीक है. Skin. Skin is very important part of our body. It is also protective, as well as this skin acts as the touch or the sensing the touching. Okay. Skin is the largest organ of our body. It is related to the sense of touch. The sense of touch is also referred to as tactioception. Skin contains
General receptor which can detect the touch, pain, pressure, and temperature. They are present throughout the skin. Skin receptor generates an impulse and when activated is carried to the spinal cord and then to the brain. ठीक है? तो कोई भी चीज हम टच करते हैं, हॉट है, कोल्ड है, पेन है, ये सारा फील जो है हमारी स्किन करती है। अगर हम स्किन का स्ट्रक्चर देखें तो मेनली स्किन का जो पार्ट है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस, डर्मिस रीजन एंड सबक्यूटेनियस रीजन। जो एपिडर्मिस है दे बियर द हेयर एंड also this contains sebaceous gland, also sweat gland। ठीक है, हेयर जो सैप्ट है वो आउटसाइड स्किन निकला होता है। ठीक है, सेंसरी नर्व अप टू द एपिडर्मिस रीजन तक रन करती हैं। डर्मिस रीजन पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स हैं। सबक्यूटेनियस पार्ट में आर्टियोल्स होती हैं। ठीक है, फैट एंड कोलेजन लेयर्स होती हैं। जो फैट लेयर होती है वो किसी सबक्यूटेनियस टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। Then these sense organs sometimes affected due to presence of foreign objects and you feel discomfort when foreign object is entered into eye, ear, nose or skin. Foreign body, in case of eye, the different kinds of foreign bodies which enter your eyes in different ways, like wings of insects, dust, coal, metal particles from the lashes, and loose eyelashes are commonly objects which get lost under the eyelid. All penetrating foreign bodies are dangerous to eye itself. There are different signs and symptoms which show the presence of foreign objects in your eye. Following signs or symptoms may be observed when foreign object is enter your eye. The person complains the pain or discomfort in the eye, redness and wateries of eye. The person complains of a blurred vision and eyelids are screwed up in a sack. When जब आपके आईज में कोई फॉरेन बॉडी इंटर करे तो उस समय आपको क्या प्रिकॉशन क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ लॉ और नॉट टू रब इनटू द आई। कोई चीज आई में इंटर करे तो आपको रब नहीं करना है क्योंकि वो और टिश्यू को डैमेज करेगी। आस्क द कैजुअलिटी टू सिट एंड पुल द लोअर लिड डाउन टू द स्टेप। Rinse the eye immediately with plenty of water for 10 to 15 minutes. Use clean water and water that has been boiled and cooled because the boiled water free of microorganisms. Make sure no liquids rinsing water runs into the another eye which is not affected. Okay? If washing of eye did not work, you may try to remove the foreign object with narrow moist strap and a twisted corner of clean handkerchief। ठीक है, एक साफ कपड़ा लेना है, उसको एकदम उसके कॉर्नर से आप उसको आंख से मॉइस्ट से उसको निकाल देना है। If something is sticking or embedded in eye, the eyeball or pupil, do not try to remove it। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज होती है जो कि आपके आई में अंदर एंकर कर जाती है, चिपक जाती है, तो उस समय आपको नहीं रिमूव हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस समय आपको आप आई को कवर कर लें और किसी नियर हेल्थ केयर सेंटर से आप जाकर उसका फर्दर उसको इलाज करा सकते हैं। डू नॉट पुट मेडिकेशन इन, आप में से आपको कुछ भी आंख में नहीं डालना है। वॉश योर हैंड आफ्टर टेकिंग केयर द पेशेंट या यूज द सोप एंड वाटर। वॉश योर हैंड, especially alcohol based sanitizer can also be used if available। ठीक है,
द फॉरेन बॉडीज इन ईयर, ठीक है। So different kinds of, sometimes foreign objects become lost in ear. The object might even damage the eardrum. Children often push object into the ear. ठीक है। Cotton wool may be get stuck in ear while cleaning it. Insects may be crawl or fly into the ear. कभी कभी आपके कान में इंसेक्ट चला जाता है, या कान जो जिस ईयरबड से साफ कर रहे हैं उसका जो कॉटन है वो भी इसके अंदर चला जाता है, ठीक। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ signs or symptoms when the foreign body is enter in the ear. The person complain the pain or itching in the ear. The person also complain the worsened hearing. There may be damage to the eardrum if the person hear a constant noise. आपको जानते हैं कि आपके 150 डेसिमल या 80 डेसिमल से वाइज जो होती है वो आपको डिस्कम्फर्ट फील कराती है, ठीक है। और 150 डेसिबल अगर आप लगातार 1-2 घंटे सुनने तो क्या हो जाए, आप परमानेंट क्या कहते हैं आपको बीपी हो जाएगी। द पर्सन कंप्लेन ऑफ ईयर पेन, ब्लड कम आउट द ईयर, कभी कभी कान से आपका ब्लड आने लगता है, या पर्सन की, ठीक है। What should be precautions taking? Never try to get lost object out of the, आपको कान में कोई चीज ऐसी हार्ड या कुछ ऐसी चीजें नहीं डालनी है, ठीक है। इन केस ऑफ कोई इंसेक्ट आपके कान में एंटर कर जाता है, यू मे फिल द ईयर विद द टेपिड क्लीन वाटर सो द इंसेक्ट कैन फ्लो आउट। आप कान में पानी डालें और उससे धीरे से गिरा दें, हो सकता है इंसेक्ट उससे निकल जाए। A casualty with an object lodged into the ear has always to refer to healthcare. हाँ, कुछ चीज ऐसी है जो आपके कान में चली गई और निकल नहीं रही, तब आप किसी फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाकर के उसको जरूर दिखाएं, अपने से उसमें कुछ भी नहीं करना। फॉरेन बॉडी इन द नोज, जनरली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, खेलते खेलते बहुत सारे ऑब्जेक्ट को नोज में डाल देते हैं, फिर पेन फील होता है, ठीक है। नोज is a very sensitive part of our body. A foreign body in the nose means that an object is present in nose when it's not naturally supposed to be there. Children sometimes push the object into the nose. These objects may get stuck or may damage the nose tissue. कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, पेंसिल है, रबड़ है, ये सब नाक में डाल लेते हैं, तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, जो नोज में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो हैं, दे फील ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट या इम्पॉसिबल टू ब्रीथ, द नोज में बी swollen और डिफॉर्म शेप होती है, ठीक है। द आंख से आंसू आने लगते हैं, आईज में बी टीयर, द नोज में ब्लीड, कभी कभी नोज के टिश्यू डैमेज हो जाने से ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड आने लगता है। द पर्सन में कंप्लेन ऑफ पेन, और आपके कान नाक में पेन होता है, उसमें आपको, ठीक है, क्या प्रिकॉशन लेना है। डू नॉट पुट द समथिंग इनटू नोज, ठीक है। नोज में अगर कोई चीज चली गई है तो उसको आपको कुछ चीज डालकर निकालना नहीं है, शार्प ऑब्जेक्ट तो एकदम नहीं डालना है, ठीक है। स्नीजिंग करनी है, कभी कभी वो नाक में स्नीज करने से भी वो चीजें बाहर हो जाती है। डू नॉट फिडल विथ फॉरेन बॉडी, मेक कॉजल्टी ब्रीथ थ्रू द माउथ, जब आपको ऐसा हो तो उसमें आपको नाक से सांस नहीं लेना, नहीं तो वो फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट और अंदर की ओर चला जाएगा और आप सांस लेने में बहुत दिक्कत, उसमें आप मुंह से सांस लें। ट्रांसपोर्ट द कॉजुअलिटी टू ए हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर, के बाद आप डॉक्टर के पास जाकर के उसको अच्छे से दिखा लें। अवॉइड स्टिकिंग कॉटन स्वैब, कोई भी एंड योर फिंगर इनटू द नोज, दिस कैन आल्सो पुश द ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। आपको नाक में कोई स्वैप या कॉटन स्वैप या फिंगर से उसको निकालने की कोशिश नहीं करना, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट और भी अंदर से सब और डिफिकल्टीज होगी उसको निकालने। फॉरेन बॉडी इन द स्किन, ठीक है। स्किन में कभी कभी आपके स्किन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एडियर कर जाते हैं, एंकर कर जाते हैं, जैसे ग्लॉस है, थॉर्न है, पीस ऑफ आयरन है, वुड और स्टोन्स है, नीडल्स है, ठीक है। में स्टक अंडर द स्किन, कुछ कभी कभी एकदम सरफेस पे होता है, कभी कभी दैट इज टू द डर्मिस, ठीक है। उस समय आपको क्या करना है, यू कैन यूजली सेफ्टी रिमूव ए स्मॉल फॉरेन ऑब्जेक्ट such as wood, splinter, thorn,
fiberglass or glass that just under the surface of skin. ठीक है सर, सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, जहाँ पे वो उस एरिया को क्लीन करना है, ठीक है, सोप और वाटर के माध्यम से। फिर यूज ट्विजर, ट्विजर से पकड़ करके उसको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को धीरे से रिमूव करना है। इसके लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास कर सकते हैं फॉर बेटर सीइंग ऑब्जेक्ट दैट इज इनसाइड योर स्किन। If the object is under the surface of skin, sterilize and clean. Sharp needle may be dipped into the rubbing alcohol. ठीक है, use the needle for gently break up the skin over the object and lift up the tip of the object. ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्किन से क्या नीडल के माध्यम से उस स्किन के थोड़े से पार्ट को रिमूव करके उसको ऑब्जेक्ट को पकड़ करके निकाल सकते हैं। यूज ए ट्विजर टू ग्रैब द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिमूव। फिर इस एरिया को वॉश करना है। वॉश करने के बाद उस पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या आपका क्या कहते हैं कोई अप्लाई पेट्रोलियम फॉर द, जिसके कारण वो आपकी बॉडी में जो भी डैमेज हुआ है वो, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। और ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड फॉरेन ऑब्जेक्ट, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट खेलते खेलते लाइक कॉइन्स है, बटन्स है, इसको मुंह में ले जाते हैं और अनफॉर्चुनेट वो क्या करते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं एंड दे कॉजिंग द चोकिंग। ठीक है, कभी कभी गले के रीजन में फंस जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो उस समय क्या करना है, इन केस ऑफ कंप्रेशन सॉलिड ऑब्जेक्ट में कॉज इंटरनल डैमेज। अगर वो शार्प है तो आपके क्या कहते हैं इसोफेगस, आपके क्या कहते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको डैमेज करते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ सॉलिड बैटरीज, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं जो बैटरीज होती हैं उनको, जिसमें कैरोसिन और पॉइजनस मटेरियल होता है, सिगरेट के स्टब्स को, कॉस्मेटिक्स है, मेडिकेशन है, पॉइजनस प्लांट को खा लेते हैं या पॉइजनस बेरीज या फ्रूट को खा लेते हैं। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कभी कभी खाने के साथ किसी की बोन चली जाती है या, ठीक है, इन केस ऑफ इन सब केसों में आपको अगर ऐसा कभी है तो आपको जरूर मेडिकल असिस्टेंस लेनी चाहिए। कभी अपने से कुछ ऐसा नहीं, तुरंत आप उसको मेडिकल असिस्टेंस के लिए जाएंगे। ठीक है, इन सम केसेस वेयर द नॉट इमरजेंसी, तब आपको घर पे कुछ चीजें कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्मॉल हार्मलेस ऑब्जेक्ट कैन बी सॉल्व्ड, जैसे द ऑब्जेक्ट विल फॉलो द नॉर्मल ट्रैक एंड बी स्पिल वाया द फीसेस। ठीक है, इन केस ऑफ इवन स्मेल डाउट कंटेक्ट द हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो बहुत सारी छोटी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप तरबूज खाते हैं, उसके बीज वगैरह है वो आराम से क्या कहते हैं थ्रू फीचर निकल जाते हैं, या छोटा सा कोई पार्ट बटन वगैरह है या होता है तो निकल जाता है थ्रू निकलने से। बट इन केस ऑफ when the dangerous object like batteries, cigarette stubs, cosmetic medication है, poisonous plant है, poisonous berries, fruit है, तो you और उस समय आपको क्या होता है कि आपको पर्सनल कंप्लेन द पेन, स्टमक पेन, ठीक है, स्टमक एच, ऑलवेज रिफर टू नियर जो भी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे आपको जाना है और उसको देखना है। ठीक है, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। वो पॉइजनस सब्जेक्ट आपको फूड पॉइजनिंग भी कॉज कर सकता है और वो भी क्या कर सकता है कि जो पॉइजनस सब्जेक्ट दैट इज इन द बॉडी। थैंक यू सो मच।